right, so you're preparing for CAT 2024 and you're thinking if HR is the right specialization for my MBA. क्या HR सिर्फ वही होते हैं, only females are supposed to do HR, और रंगोली कंपटीशन अरेंज करते हैं, उनका काम क्या होता है एग्जैक्टली क्या मुझे कौन से कॉलेज से करना चाहिए, क्या मैं MBA इन HR के लिए बना हूँ या बनी हूँ कि नहीं. All these questions are going to get answered in this video. Welcome to the Wired MBA channel, and I'm going to discuss if HR is the right specialization for your MBA. So come and do not forget to watch till the end. Firstly, what exactly does an HR do? Function क्या क्या होते हैं? So HR का काम है onboarding तक सारा काम करना. So choosing the right candidate, designing the campaigns, posting about the job, planning the interview, conducting the interview, उन सब काम से लेके onboarding तक पूरा जिम्मा HR का होता है. सेकेंड इज द एम्प्लॉय रिलेशंस. सो एम्प्लॉयज के साथ कैसा रिलेशन है, दो डिपार्टमेंट्स के बीच में झगड़ा हो रहा है तो उसका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, रिसोर्सेज कम है तो कौन से डिपार्टमेंट को कितना रिसोर्स मिलेगा, कब मिलेगा, एम्प्लॉय को इंगेज करना, पॉलिसीज डेवलप करना, ये सारा काम एचआर का होता है. Upskilling is a very important part of the job. So training and development, skill development, then career path, career chart करना एक employee का organization में, उनका performance improvement करवाना, उनके performance को supervise करना, ये सारा काम HR का होता है. So a lot of those people who have WorkX would realize that they would dread the HR performance reviews, right? So you would be in that position where you would be reviewing the performance of a lot of employees. You would be setting goals for them. You would be helping them in order to get a lot of recognitions and rewards, and which in turn would also benefit you. Also, finally, the salary part. So हाँ, HR का काम होता है salary देखना. So salary administration, benefits को manage करना, compliance manage करना, ये सारी चीजें HR का function है. Now, but मुझे क्या क्या करना होगा, like what are the skills that I have to possess? Now, if you do not possess 5 out of 10 of these skills, don't worry. If you do not possess, maybe 7 out of these skills, don't worry. You still have time. You can work on these skills and start developing them. So number 1 is communication. तुम्हारा काम है bridge करना employee के बीच में and organization के बीच में, top management के बीच में. You are the bridge. So you need to be very clear and on point with your communication skills. Empathy, तुम्हें उनकी बात भी समझनी है और उनकी बात भी समझनी है. That is why you have to think from an empathetic point of view and also ethical point of view, which is the point over here. So what do you mean by ethical? जहाँ आपका ज़मीर माने. So basically ethical behavior is very important. सारे प्रॉब्लम्स ग्रीवेंसेस लेकर, पॉलिसीज का प्रॉब्लम लेके, सैलरी का प्रॉब्लम लेके आपके पास आने वाले हैं. सो नेगोशिएशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर टू स्किल्स विच आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस. ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, तो काफ़ी चीज़ें एक साथ करनी पड़ती है. एम्प्लॉयज़ को हैंडल करना पड़ता है, मैनेजमेंट को हैंडल करना पड़ता है, देन रिक्रूटमेंट हैंडल करना पड़ता है, सैलरी वाला पार्ट हैंडल करना पड़ सकता है, स्पेशली इफ यू आर एट अ हायर पोजिशन. चेंज मैनेजमेंट हैंडल करना पड़ सकता है इफ यू इन द एचआर कंसल्टेंसी पार्ट. सो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है. एंड अडेप्टेबिलिटी, बिकॉज रोज़ रोज़ नए लोगों के साथ, नए डिपार्टमेंट्स के साथ, नई टीम्स के साथ, नए रोल, हर दिन एचआर का रोल एक नया रोल होता है. सो वो अडेप्टेबिलिटी स्किल्स भी होना चाहिए. यू शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशिएंसी. So though you are human resource, but you don't have to do everything manually. There are a lot of softwares, there are a lot of tools which help to streamline all the HR processes. So you need to be someone who can get onto these technological skills very easily and you're very comfortable in using these. Now, educational background and experience. So मैम, अगर मैं fresher हूँ, क्या मेरे को MBA in HR करने का मौका मिलेगा? So yes, most of the institutes do not require prior work experience for the MBA in HR. Now, a person can choose HR even when you are from any field. All right. So India में graduation in HR is not very common. It's very very rare. So कोई भी background से हो, fresher हो, work हो या नहीं हो, you have good chances at being selected for the MBA in HR program at good colleges. Now, any internship or WorkX in the particular field is preferable and would be advantageous. If now, at this point of time, you are getting an opportunity to do an internship in HR, don't miss out on it. It will help you warm up to the kind of roles, the functions of an HR, and automatically it will help you leverage all of this during the interview. Now, if you can't afford a lot of time,
and get into internship or work you can definitely work towards getting a certification or diploma in recruitment skills, talent acquisition skills, negotiation skills, problem solving skills, leadership skills. तो अगर आप इस तरह के certifications करोगे, the interview will build that trust that okay, even though you're not from this background, you have put in efforts to learn about it. Now, these are a few top institutes that provide MBA, PGDM और MA in HRM. अब देखो, जब आप फुल टाइम PGDM प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हो, कोर PGDM, maybe at all the IIMs, then you first year is a general PGDM and in the second year you can choose the specialization between these four specializations: marketing, finance, operations and HR. ठीक है, ये सेकेंड ईयर पे सिलेक्ट करना होता है. बट कुछ कॉलेजेस जैसे टिस, जैसे कि एक्सेलराय, जैसे कि IMI दिल्ली, XIM भुवनेश्वर और XISS रांची, ये स्पेशलाइज्ड कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं HRM में. सो at the time of filling up the application form for the college, not the exam, the college, at that point of time you can choose PGDM in HR and go ahead with it. All right, so I hope this is clear. And if you want access to more live classes, mock strategies, a lot of free resources, and join, you need to join the IIM one attempt challenge. कुछ नहीं करना है, you just need to comment CAT in the link and you will get the link from my team. Don't forget to like and subscribe. All the best.